are now joined in by the former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mr. Kavinder Gupta. Mr. Gupta, thank you so much for speaking with us. I'd like your first reaction to the fact that the PFI has now been banned. देखिए, इस प्रकार की जो संगठन है उनको बड़ी पहले से बैन किया जाना था। कांग्रेस की सरकारों में या दूसरी सरकारों में इन लोगों को पनाह दी गई और उसी का कारण ये शुरू से ही कभी गांधी जी की हत्या को लेकर के, कभी इमरजेंसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे जो राष्ट्रभक्त संगठन है उन पर एक्शन करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये मानसिकता जो इनकी बनाई है खुले हाथ में उनको दिए हैं, वो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने दिए हैं। आज भी केजरीवाल जैसे लोग इनका समर्थन करते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की पुरानी गलतियों के कारण से ये सब हुआ है और ये देश की तबाही में बहुत देर से लगे हुए हैं। आज इनको सरकार ने बैन करके इनको परमानेंट बैन करना चाहिए। इनकी मानसिकता क्या है ये देखने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है। इससे निश्चय ही इस प्रकार के लोगों को जब अरेस्ट भी किया जाएगा, पकड़ा भी जाएगा, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, तो निश्चय ही हिंदुस्तान की जो एक ऐसी मानसिकता है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और आप ये ऑर्डर कैसे देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा से, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत टेररिज्म का एक्टिविटी भी है। ये बैनिंग के बाद टेरर एक्टिविटी जम्मू एंड कश्मीर में क्या इम्पैक्ट होगा? All right, we're trying to re-establish that connection. But we are now going to listen into some other reactions that are coming in on the story. जोधपुर में कई जिलों में, उदयपुर में कई जिलों में वहां पे दंगा हुआ। उसी समय हम कहते हैं कि पीएफआई का उसमें हाथ है, सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहां तक कि जब यहां पे भी सरकार थी हमारी, इनकी सिद्धरमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता का आक्रोश था कि पीएफआई बैन होना चाहिए, इसलिए बीजेपी को इस्तेमाल किया बोलकर पीएफआई का नहीं, जब कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटी, राजस्थान से लेकर के हैदराबाद या इवन कर्नाटक में भी इस प्रकार से घटनाएं घटी, और जिसमें पूरा का पूरा लग रहा था कि ये षड्यंत्र करके एक राज्य में नहीं कई स्टेट्स में यह प्रॉब्लम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो एनआईए ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का, इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। और सर, आपको पता है 40% आरोप कर रहे हैं सरकार के ऊपर और पे सीएम बोलकर पोस्टर्स को लगा रहे हैं कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस की छोटी बुद्धि है। हमारे मुंबई जी जिस प्रकार से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनके अकाउंट में सीधे पैसा भेजना, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देना, एससी एसटी वर्ग को विशेष रूप से पैकेज देना, जिस प्रकार से आम व्यक्ति के काम कर रहे हैं, ही जे कॉमन मैन, और इस प्रकार से बात करना, कांग्रेस का आरोप लगाना, कमीशन की बात करना और एक स्तर से नीचे गिर के करना, ये मैं कहता हूं कि यह कॉमन मैन का अपमान है। और कॉमन मैन का अपमान है, कर्नाटक का अपमान है। और कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के कॉमन मैन जो है, इस कॉमन मुख्यमंत्री जो कॉमन मैन मुख्यमंत्री है, उस पे जो इन्होंने आरोप लगा कभी माफ नहीं करेंगी। दिस इज इंसल्ट ऑफ कॉमन मैन बिकॉज आवर सीएम इज ए कॉमन मैन। ही इज वर्किंग फॉर द एग्रीकल्चर, आर्म, पुअर, एग्रीकल्चर, ही इज वर्किंग फॉर देम। So this is insult. All right, now I'm crossing over to our correspondent who's been tracking this story from Bengaluru as well. Now, Ritu, essentially over to you now, because essentially the PFI has now been banned for a period of 5 years. Yes, you see, the state government was also, in fact, mulling over a long time for the ban of this organization. But now here comes a big step from the central government itself. But remember, there has been a lot of communal-related violence across the Karnataka. In the recent time, it has been even more. Where, whether it's about the hijab issue that we saw, how it also spread across different states and it became an international level news as well. So that was, the turns that the hijab issue had taken here in the Karnataka, and later point as well, the murder of
Praveen Nataru in the Mangalore. There too, the police had suspected the links of the accused with the PFI and SDPI organization. So there too, we saw how usually the PFI and these kind of an organizations had been a problematic in the coastal Karnataka especially. But yes, then later point we also saw again in the Shimoga too, when a clash erupted between the two groups over the Savarkar's poster. There too, we saw there were a suspected links of the accused with the PFI organization and other organizations as well. So with all this in the Karnataka just taking place in couple of months, the state government was very serious about it. But the major step had come in right after the murder of the Praveen Nataru, because that's when the state government in fact took this whole issue more seriously and started approaching central government and also mounted the pressure too for the ban of this organization, because you see there were a lot of the members of the RSS and the other organizations who were working for the BJP party, especially the BJP Yuva Morcha workers. They all started tendering their resignations in a huge number. So it seems that's was a problematic for the state government. And there was other instance also that we saw how a vehicle of Nalin Kumar Patel, Sunil, the minister's vehicle was still geared in the Mangalore, demanding justice for the Praveen Nataru as well, demanding the safety for them, because this kind of an incident is taking in people's life when they are working for the party itself. So that were the kind of words that these workers had put in front of the ministers and as well as the state government. So therein too, we saw how the CM Basavaraj Bommai reacted to this whole incident and also promised that he will ensure that such incidents do not take place in the future. And for all that, whatever will be the necessary steps, the state government will take up and won't even hesitate to bring in more stricter rules than the UP model. So these were the words that CM Basavaraj Bommai had given. And then when the Home Minister also said that these organizations have been creating a lot of problems in the society, and thus the state government has already taken up seriously and is approaching the central government continuously to ban this organization, because in the Karnataka it has been a huge problem because of the communal violence that are taking place, and then the accusers being suspected of having links with this organization. So with all that, you see there comes a big step right now. All right, Ritu, stay